सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो कट हो गया था. सो लेट अस बिगिन अगेन. नाउ सपोज इस तरह का प्रोपोजिशन है, नॉट ऑल डॉग्स आर मैमल्स. नॉट ऑल डॉग्स आर मैमल्स. सो ये एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है. सो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होने से हम कैसे शुरू करेंगे? फॉर ऑल एक्स. इफ एक्स इज अ डॉग देन एक्स इज नॉट मैमल. सो सी, सो फॉर ऑल एक्स, if x is a dog then x is not a mammal. दूसरा, something is mortal. Something is mortal. So there is at least one x. X is mortal. So इस तरह से हम symbolize करेंगे. Existential quantifier because something and x is mortal. Then everything is mortal. There exist uh, for all x. Sorry, because it is everything. So for all x, x is mortal. Something is not mortal. Something मतलब existential quantifier. At least there exists at least one x such that x is not mortal. Nothing is mortal. Again universal quantifier. So this is the symbol for universal quantifier and x is not mortal. So इस तरह के singular proposition को हम ऐसे symbolize करते हैं. Now individual proposition अगर हो, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ न्यूज़पेपर. सो टाइम्स ऑफ इंडिया एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल थिंग है. द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट इज़ अ न्यूज़पेपर. सो इसको हम इस तरह से सिम्बोलाइज करेंगे. ओके. एंड फॉर न्यूज़पेपर, ई फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, नोरा इज़ नॉट एन इंडियन. So I for Indian and X for Nora and curl sign for is not an Indian. Next, Kane is either an architect or a chef. So Kane is either an architect or a chef. Next, all dogs are mammals. All dogs are mammals. So universal. So for all X, if X is a dog then X is a mammal. So इस तरह से हम इसको symbolize करेंगे. This is the symbol for universal quantifier. If X is a dog, then X is a mammal. No cats are reptiles. Again, it is universal. So for all X, if X is a cat, then X is not a reptile. So this is universal. This is the symbol for universal quantification. X is a cat, then X is not a reptile. Some apples are green. There is at least one X. If X is an apple, then X is green. So existential quantifier, symbol for existential quantifier, if X is an apple and X is green. Okay, X is an apple and X is green. Next, apples and orange are wholesome and delicious. So इसको हम कैसे करेंगे symbolize? For all X, if X is an apple or X is orange, then X is wholesome and X is delicious. So as it is universal proposition, so हम इसको symbolize करेंगे with this symbol. Universal quantifier से symbolize करेंगे. If X is an apple, AX, or X is an orange, OX, then X is wholesome and X is delicious. ठीक है. Next, there are happy marriage. There are happy marriage. मतलब all the marriage are not happy. There are happy marriage. That means it is not universal, it is existential. So there is at least one X. X is happy and X is marriage. So इसको हम symbolize करते हैं ऐसे. पहले हम लोग existential quantifier का symbol, then X is happy and X is marriage. All that glitters is not gold. So there exists at least one X such that X glitters and X is not gold. So as it is a existential quantifier, so हम लोग इसको ऐसे symbolize करेंगे. This is the symbol for existential quantifier. X glitters and X is not gold. ठीक है. नाउ आप लोग सोच सकते हो कि ये वो ऑल से शुरू हुआ है तो फिर ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल क्यों है. सो अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो हम लोग कैसे बोलेंगे
कि जो भी चमकता है सब कुछ गोल्ड नहीं होता, पर उनमें से कुछ गोल्ड हो भी सकता है। ओके, क्योंकि गोल्ड भी चमकता है। सो गोल्ड भी चमकता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो चमकता है पर गोल्ड नहीं होता। दैट मीन्स इट इज़ पार्टिकुलर proposition and not a universal proposition. That's why हम लोगों ने existential quantifier यूज़ किया है, because it is a particular proposition. क्योंकि जो भी चमकता है सब कुछ गोल्ड नहीं होता, so it is not universal, it is particular. Next, some rabbits are not white. Some rabbits, so existential quantifier का symbol, okay, and X is a rabbit, then X is not white. Snakes are reptile, universal. All snakes are reptile, right? So it is universal. So this is the symbol for universal quantifier. X is a snake, then X is reptile. If X is a snake, then X is reptile. Children are present. मतलब children are present मतलब it is not universal, it is particular, because we are not talking about all children, we are talking about some children are present. Okay, so हम लोग existential quantifier यूज़ करेंगे इसको symbolize करने के लिए. So if X is a children and X is present, X is a children and X is present. Only citizens can vote. ओनली सिटीजन्स कैन वोट, इस तरह का और एक हम लोगों ने किया था पहले. सो जो भी वोट कर सकता है वो सिटीजन है. इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है जो भी वोट कर सकता है वो सिटीजन है. सो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन. सो वी विल स्टार्ट विद द यूनिवर्सल सिंबल या फिर यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इफ एक्स इज अ वोटर देन एक्स इज अ सिटीजन. नेक्स्ट, एनिमल्स exist. Animals exist. So this is the symbolical form. Animals exist. Existential quantifier and ax मतलब animals exist. Next, anything is conceivable. Again, this is universal. Universal. Then we have to use universal quantifier and anything is conceivable. This is the symbolical form of this simple sentence. Cx. Anything is conceivable. C for conceivable and X means anything. Unicorn do not exist. Unicorn, this is also a universal proposition. So this is the universal quantifier. Unicorn, U for unicorn, does not exist. Do not exist. Sorry, unicorn do not exist. Okay. सो मैंने कोशिश किया है आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने का. आई होप ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों को क्वांटिफिकेशन में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू.